Hello students, so today we are going to study sexual reproduction in flowering plant. Okay, so sexual reproduction in flowering plant. Okay, so this chapter is basically divided into three parts, that is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization में we are going to form the male and female gametes and the transfer of male gamete to the female gamete. फिर फर्टिलाइजेशन फेज में मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फर्टिलाइजेशन है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देयर इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, देन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन आर देयर. ओके, सो before jumping into the topic, the formation of male gamete, first we'll study a brief about flower. Okay, so this is the pedicel. I am drawing flower over here, pedicel, or you can say the stalk, right? And on this there is swollen portion. This swollen portion is called thalamus, or you can say the receptacle. Please also remember the alternative name of them because they are very much important. And now on this thalamus, this bulge portion, there are four walls. Okay, four walls are there. That is obviously in lower classes you have already studied. That is the petals, sepals, androecium and gynoecium. So the first wall is, these are sepals. Okay, sepals also called as calyx. Now the colorful wall, attractive one, this is the petals. Okay, these petals are there. Petals also called as corolla. Now the third wall is of androecium. Androecium, male reproductive part. Okay, so androecium consists of stamens. Androecium consists of stamens. Okay, and the fourth wall is of gynoecium. Now I am labeling. This is anther and this is filament. So together they are called as stamen. Okay, and now the parts of carpels are, this is stigma, this is style, and this bulge portion is ovary. Together they are called as carpel. Okay, and carpel constitutes of gynoecium, stamen constitutes androecium. Okay, now these four walls, first of all we are going to see the function. The function of calyx. Calyx are green in color, so they perform photosynthesis, but their primary function is to protect the developing reproductive organ during bud stage. So during bud stage, what will happen? During bud stage, during bud stage, okay, they protect inner developing reproductive part, that is male and female reproductive part को. ठीक है, now corolla, ये क्या करेंगे? Obviously attract insects for pollination. Both these walls, see, calyx and corolla, these are called as accessory wall, or the non-essential wall. Why they are called accessory helping wall? Because they are helping in reproduction, right? They are helping in attracting the insect for pollination and protecting the reproductive part during bud stage. That's why. So they are accessory wall.
the chief and main word are the carpel and the stamen, androecium and gynoecium, because they are directly performing the reproduction. Okay, so the stamen, यहाँ पे I am writing stamen and carpel. Okay, so these both are called as essential word because they are directly taking part in the reproduction. Sometimes question comes like arrange these words from outer to inner or inner to outer. Okay, so inner to outer, if it comes, the first is the gynoecium, then androecium, then corolla and calyx. So inner to outer and outer to inner, first this is sepals, calyx, then petals, corolla and then androecium and gynoecium. कभी कभी अरेंज करने को भी आ सकता है. ठीक है. So now before actual flower is seen, okay, on the stem, what happens? Plant already has taken the decision कि this particular branch is going to flower. ठीक है. अब वो decision कैसे होता है? Now we are going to see that. ठीक है. See what will happen? Plant के अंदर structural plus hormonal changes will occur. Now what will happen? The apical meristem will change. ठीक है. Apical meristem converts into floral meristem. Apical meristem floral meristem में change हो जाएगा. And once it changes into floral meristem, see what happens. See, this is the floral axis. ये क्या है? Floral axis है. जैसे floral axis है. Now, अब पहले अगर apical meristem होता तो यहाँ से जो shoot बनता तो हर यहाँ पे node पे क्या आते थे? इधर यहाँ पे leaves arise होते थे. Now what will happen कि अब यहाँ पे leaves arise नहीं होंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? ये पूरा का पूरा यहाँ पे it will change into floral meristem. ठीक है. So see यहाँ पे ये floral, यहाँ पे ऐसे. So first this is floral primordium. Okay. See this is floral axis. Okay, the branch which is bearing the flowers. So the arrangement of flower on floral axis is called inflorescence. ठीक है. So now what will happen? यहाँ पे हर एक नोड पे इधर floral primordia will born. Floral, तो यहाँ पे सी floral meristem, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? Floral primordium. It is earlier stage of bud. ठीक है. बहुत एकदम छोटा सा floral primordium. After this floral bud will form. Then flower. Floral bud will open and it will form flower. Okay. So यहीं पर ही बाद में ऐसे floral bud and then यहाँ पे पूरे इस एक्सिस पे flowers आ जाएंगे. So it is called as inflorescence. Okay. So now see, अब जो flower है, flower actually में क्या है? It is reproductive organ, right? Let me rub it also. ठीक है. So basically what is flower? Flower जो है it is reproductive. It is reproductive organ of plant. ये reproductive organ है plants का. ठीक है. And it is also defined as condensed, modified reproductive shoot है. ठीक है. अब मैं यहाँ पे बताती हूँ हाउ. सी shoot bears leaves at each node. ठीक है. So what will happen? अब जो ये node है ना, जैसे 1 2 3 4, जो ये node है, node पे अब leaves modify हो जाते हैं किस पे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड जाइलोशियम. सी यहाँ पे लाइक यहाँ पे सेपल्स, यहाँ पे सेपल्स विल गेट फॉर्म. यहाँ पे ऐसे ऐसे पेटल्स विल फॉर्म. ओके. यहाँ पे पेटल्स, इधर पे
ऐसे एंड्रोशियम, एंड यहाँ पे ऐसे करके ये गाइनोशियम विल फॉर्म. सो ये पहले यहाँ पे लीफ होता, बट लीव्स का मॉडिफिकेशन ये होते हैं सेपल्स, पेटल, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, और अब इसको ऐसे कंडेंस कर दो, फ्लावर विल गेट फॉर्म. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंडेंस मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट. अगर इफ समवन सेज ट्यूलिप फ्लावर इज modified stem or it is modified condense reproductive shoot, yes, कोई भी फ्लावर जो भी है वो सारे के सारे modified reproductive shoot है and it is condense. Okay, so please ध्यान रखना. Now the second question can comes from here that in flower how many nodes and internodes are there? So you can see 1 2 3 4. So 4 nodes are there, 4 nodes and 3 internodes. ठीक है, 3 internodes, 1 2 and 3. ठीक है, 1 2 and 3, 3 internode. The portion between 2 node is called internode. So 3 internodes and 4 nodes. ठीक है, question can form like this also. So now जो flower है, flower is you know एक fascinating, बहुत fascinating, attractive है, right? फ्लावर को हम रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू, सोशल जो सोशल वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ होता है. एंड फ्लावर मीन्स अपना इमोशन डिपिक्ट करने के लिए भी, लव अफेक्शन शो करने के लिए भी वी यूज़ फ्लावर. एंड ऑल्सो देयर आर मैनी थिंग्स फॉर्म फ्रॉम फ्लावर्स लाइक डाई, परफ्यूम, सेंट. ओके, सो फ्लावर इज बेसिकली वी यूजिंग फ्लावर, बट दे आर बेसिकली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. ओके, so now after having this brief, so now we'll come to the topic. First we are going to form the male gamete, right? So the name of the topic is stamen, microsporangium and pollen grain. ठीक है, stamen, microsporangium and pollen grain. Okay, sometime in exams they ask the alternative name of them. Please remember, stamen are also called as microsporophyll. ठीक है, and pollen grain are also called as male gametophyte. Okay, तो alternative name भी you should remember. ठीक है, now first of all here is androecium. एंड्रोशियम क्या है? दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन. जितने भी स्टेमन एक फ्लावर के अंदर है, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट्स द एंड्रोशियम. सो कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स. सो वी आर गोइंग टू स्टे वन स्टेमन. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी वन स्टेमन. सी, this stamen consists of 2 parts. This is anther and this one is filament. Okay, and this is the diagram of stamen, right? So stamen, it is having 2 parts. One is anther and filament. So anther is fertile part and filament is sterile part. Fertile and this is sterile. Okay, so now first we will see about the filament. Okay, I am just writing over here A, the filament. Okay, so filament क्या है? This is the long slender stalk. ठीक है, which bears the anther. Long cylinder stalk, long cylinder stalk है ये. एंड यहाँ पे ओके, सो व्हाट विल हैपन, फिलामेंट के ऊपर क्या है? एंथर. अब इसका प्रॉक्सिमल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट. ओके, सो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड. फिलामेंट की प्रॉक्सिमल एंड है, इट इज अटैच टू, प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू पेटल्स. ठीक है,
attached to petals, or you can say the thalamus. ओके, एंड डिस्टल एंड पे क्या है इसके, एंथर इज देयर. ठीक है, डिस्टल एंड यहाँ पे बियर्स एंथर. ओके, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑलरेडी PYQ हैज आस्क्ड फ्रॉम दिस कि डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड पे क्या है. सो यू शुड रिमेंबर इट. सो फिलामेंट के बारे में इतना ही है. आगे विल स्टडी अबाउट द एंथर. ओके, सो इफ समवन आस्क्स यू कि define the anther, okay, anther of angiosperm. So there are 4 terms, major terms for it, anther के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम B part, that is anther. When you will describe anther, anther is bilobed, dithecus, tetrasporangiate, okay, and tetragonal. Okay, now यहाँ पे bilobe you can see there are 2 lobes, that's why it is called, 2 lobes are there, that's why it is called bilobe. See, you can see, अगर आप इसको सामने से देखोगे तो 2 lobes दिख रहे हैं. ओके, ऊपर से देखोगे the transverse section, तो the structure will be different. So bilobe यहाँ से हमने समझा दिया. एंड अगर हम इसको ऊपर से देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन हम यहाँ पे से लेंगे, तो हाउ इट इज गोइंग टू अपीयर, इट विल अपीयर समवट लाइक दिस. ओके, ये कुछ ऐसा अपीयर होगा आपको ऊपर से. ठीक है, एंड सी इट इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट बिकॉज 4 माइक्रोस्पोरेंजियम आर देयर. सी पहले मैं बता देती हूँ. This one is one lobe and this is the other lobe. Okay. Now first of all it is called dithecus. Dithecus means dithecus, each lobe 2 theca. ठीक है, each lobe 2 theca are there. Now अगर हम NCERT देखें तो each lobe 2 theca is present in young anther. Young anther में theca क्या है, theca is cavity, this portion. ओके, यहाँ पे अंदर क्या है, पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू है. दिस पोर्शन इज कॉल्ड 1 theca एंड दिस इज द अदर theca. सो 1 lobe 2 thecas are there and these theca are separated by this longitudinal groove. This longitudinal groove is running downward. This longitudinal groove, okay, यहाँ पे these theca are separated. This longitudinal groove is called line of dehiscence. Line of dehiscence, or you can say stomium. So mature anther जब split होगा, it will split from here the line of dehiscence, or you can say the stomium. Okay. Now tetrasporangiate. Why it is called tetrasporangiate? Because 1, 2, 3, 4 microsporangium are there. Okay. So tetrasporangiate. Why? Tetrasporangiate. ठीक है, क्यों? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम are present at 4 corners. Okay, so 1 lobe 2 microsporangium are there. Now this is 1, this is the second, third and fourth is tetragonal. Tetragonal why? Because it is having 4 sides. मैं उधर पे लिख देती हूँ इसको. ठीक है, 4 sides. ठीक है, क्या है इस पे, 4 sides of anther. यहाँ पे 4 साइड है ना TS में. ये क्या है आपको, TS है, TS ऑफ एंथर. ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का, तो यहाँ पे आपको 4 साइड्स दिख रहे हैं एंथर के. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है. राइट, यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा. यहाँ पे सारा का सारा स्पोरोजिनस टिश्यू. एंड ये अभी माइक्रोस्पोरेंजियम है when it is containing the sporogenous tissue, but in mature anther this sporogenous tissue will forms the pollen grain. So now the microsporangium will called as pollen sac. ठीक है, तो in next class we'll study about the structure of microsporangium, जिसमें we'll study the wall layers. यहाँ पे जो wall layers होती हैं
4 wall layers are there, or under here the microsporangium which is containing the sporogenous tissue. So in next class we will continue further. Okay.